आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर, जहां कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक एक एरिना खुला है, उसमें आतंक कैसे फैलाओ? ये मेरे अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो उनको डरा के धमका के कैसे रखो? आप मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको दबाऊं कैसे? एक नया औजार ढूंढो, एक नया तकनीक निकालो। ये आपको उस व्यापकता में देखना पड़ेगा। और इस सब का आपका एक्चुअल आंकड़ा उपलब्धि का क्या है? आपका आंकड़ा है 24 कन्विक्शंस। 24 कन्विक्शंस अभी हुए हैं इस तरह की चीज़ों में, कई दशकों में। अगर 24 कन्विक्शंस हुए हैं तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ढांचा सिर्फ प्रताड़ना के लिए, हैरेसमेंट के लिए, दुरुपयोग के लिए ही हो सकता है। और वो दूसरी बात हमने अलग से बात कर ही ली है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और जीएसटी की भी गड़बड़ी भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पर्चा करके बीजेपी भाजपा का मेंबर बनना है, बस। वो आपके सब कुकर्म धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अंत में दोस्तों, ये उस परिप्रेक्ष्य, उस संदर्भ में भी देखना है कि क्या एक संदर्भ में, एक पूरे समाज और राजनीतिक ढांचे में क्या उपयोग या दुरुपयोग हुआ है ईडी की मशीनरी का। अभी कल परसों की बात है, मैं भी उसमें पेश हुआ था श्री रणदीप सुरजेवाला जी के लिए, वो याचक थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये बार बार जानबूझकर के आपको दुनिया भर में एक ही आदमी मिला है, क्या सिर्फ एक यही आदमी है जो ईडी का डायरेक्टर हो सकता है? एक बार मना किया हमने, दूसरी बार बना दिया, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार बना दिया। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है। और ये परिप्रेक्ष्य है कंट्रोल फ्रीक सरकार, नियंत्रण सरकार, प्रताड़ना सरकार, डरा धमका के रखने वाली सरकार। और आप बार बार जीएसटी की बात करते हैं। आज रियल जीडीपी में कितना कम हुआ है? हमारे पास जो आंकड़े हैं, और मेरे कॉलीग्स ने इसी पोडियम से आपको ब्रीफ भी किया है, पिछले 4 सालों में औसतन विकास दर, हमारे जो फिगर्स हमने दिए यहाँ से, उस पर 3.4% है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। आप इतना हल्ला कर रहे हैं जीएसटी में, क्यों? कि मैं आपको डरा धमका के जीएसटी निकालूंगा पीएमएलए द्वारा, और आपकी ग्रोथ रेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। इसलिए मैं अंत करूंगा अपनी बात, जो बात मैंने कही उस पर जो प्रश्न उठते हैं उनको सारांश में, संक्षेप में आपके सामने रख के। एक, ऐसा नया नोटिफिकेशन, दस्तावेज अचानक बिना विचार विमर्श के कैसे आया, क्यों आया, आपकी पीठ पीछे क्यों आया, लुका छुपी में क्यों आया? दूसरा प्रश्न, क्या इसका एक ही कारण है कि आपके डर और भय को ज़्यादा व्यापक बनाना, जो अभी से ही चल रहा है कई सालों से दुरुपयोग, उसकी व्यापकता को बढ़ाना? तीसरा, क्या इसलिए किया कि चुनाव अब निकट भविष्य में है? क्या चुनाव जिसमें कि ऐसे छोटे या मध्यम वर्ग के बिजनेस आते हैं, उनको नियंत्रण करने का ये एक नया तरीका चाहिए था 2024 के चुनाव के पहले? नंबर 4, क्या इसका विशेष प्यार और विशेष संदेश सिर्फ विपक्ष के लिए रखा जाएगा? विशेष आंख? और इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? जो इतने सालों से चल रहा था, अचानक इस महीने लाने की आवश्यकता क्या थी? इस सब का आंसर एक ही हो सकता है, टैक्स टेररिज्म बाय दिस गवर्नमेंट। बिकॉज फ्रेंड्स, दिस इज ए मेथड बाय द मोदी गवर्नमेंट टू प्रैक्टिस, propagate and promote tax terrorism. It is a triple tactic. It's a triple tactic of constraint, compulsion and coercion by the BJP through a mere notification to create a new regime to wreak havoc on the business community, and through the business community to members whom it doesn't like, of civil society, of the opposition, of other segments, which do not or who do not toe its line.
This is a clear another tactic by the BJP to intimidate, to incarcerate and impersonate. So it's an attempt to constrain, compel and coerce by intimidation, incarceration and imprisonment. In particular, I have no doubt that their special affections in this regard, their special love will be reserved for only segments of the opposition. Friends, very briefly, suddenly on 11th July, in the most most surreptitious move possible, you have brought to the attention of the GST Council. Remember, it is not consultation with GST Council, it is bringing to the attention of the GST Council what you suddenly, surreptitiously through the back door introduced on 7th of July. Why was GST Council created? GST Council was created for a genuine, reasonable give and take. 9 major states have opposed it, but you have given only a fait accompli. You are telling the council, we have decided. Now we are telling you, like it or lump it, this is a given. Number 2, was it ever brought in any manner to Parliament? Was an attempt made in any manner to discuss, forget Parliament, in civil society? Was there any large-scale consultation with the trading community? All the answers are no. I called it tax terrorism for that reason, because it has to be covert, clandestine, surreptitious, all of which it is. Number 4, is your trade, your exports galloping? Is your trade position so rosy that you can instill fear in those who do trading? Surely, given our trade export figures in particular, this inclusion and change in law will lead to small people being investigated, usually wrongly or slantedly, because if I don't like you, or your affiliations are to somebody I don't like, or you belong to an opposition framework, then well, this is my new weapon. Fifthly, does this increase the cost of compliance for these industries and units? Hugely. SMEs in this country pre-COVID have been complaining about cost of compliance. India, for all the rhetoric you hear about ease of business, has a huge cost of compliance. And every time you see the Honorable Prime Minister and the government tom-tomming ease of compliance, we may move 1 or 2 notches up, but we are way down in the global ranking. Into that already low ranking, you are introducing huge additional cost of compliance. Number 6, all the GST Council members were blindsided by an evasion because you did everything in a tearing hurry. A tearing hurry was vital for your plan to succeed. That is why I said you brought it from the back door. 2 of the usual funny, they would be actually comic if they were not tragic, reasons have been trotted out. Exactly the same reasons as trotted out in demonetization. Those 2 words have become the favorites of this government. Tax evasion and curbing terror funding. You are going to curb tax evasion by putting PMLA on GST transactions. For all these years, PMLA came, how much I don't remember now, 20 years. Different forms. Before that, FEMA has been there, FERA has been there for a long time. Yes, we didn't have sales tax, we didn't have GST till 2016, but we had sales tax. We had all those taxes which form part of excise and sales. You could do without this, and you did not have tax evasion and terror funding curbing thoughts at that time? No, sir. The real reason is elections are around the corner. No, sir. The real reason is that large segments of trade and industry who don't toe your line, or who have affiliations and connections elsewhere, or who have the ability to think and speak independently, will be able to be brought in line
by these draconian measures. And this country and this, from this podium, we are not speaking as if it's a new tabula rasa, a clean slate. We are all speaking from experience. What has been the experience of the ED in the last several years? Just 2 days ago, you had a judgment. I had the privilege of presenting Mr. Surjewala there. It has clearly said this government is acting as if there is only one man on earth whom they can appoint and reappoint on the ED, PMLA jurisdiction and never disappoint. He has now been disappointed finally only by the Supreme Court judgment. By the way, this is true of 3 or 4 other important positions. People serving on extensions, if you take out the list, you know the meaning of extension? If my age is complete, this man has a legitimate claim for getting that post. If this man's age is complete, you have a legitimate claim to get that post. Everybody is disappointed because important positions, I'm not talking of individuals, from cabinet secretary downwards, are all given ad hoc extensions. For 70 years, CBDT chairman were never given extensions like this. For years, you are given. So this is a sarkar which believes in control freak. It believes in